I was earning very well, leading a very nice lifestyle in the UK. I was driving a BMW for that sake. Okay, I got shattered inside. Yeah. Who is he talking to? Does he even know who I am? मेरा मन किया कि मैं उसको दे दूं उस time. Let's say दिव्यांका, who's like probably one of the biggest stars, कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप दिव्यांका को लोगे तो टीआरपी जितनी ये मोहब्बतें की आएगी उसकी दूसरे शो की भी उतनी है. What needs to change? The TRP system. अभी शादी का डाल दिया जबरदस्ती का 3 दिन चल जा रहा TRP, फिर मार दिया, फिर reincarnation हो गया. What is that one thing that you're extremely thankful to TV for, and what is that one thing that you think, yeah, this needs to change? Very stupid for people to say कि TV actors को acting नहीं आती, over acting करते हैं. अरे boss, test us. जब आप एक्टिंग करने आ रहे थे तब आपको पता था कि एक्चुअली एक्टिंग तो छोड़ो, ये सारी चीजों पे मुझे काम करना पड़ेगा? नहीं, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था ना. When I came here, Facebook was the thing. Yeah, you know. I think all of us. And we come from that, and I'm glad that we come from that era where we've seen that part of the world, that phase of the world, and now we are in it now. So basically, I think I don't really give much importance to it. मैं करता हूँ अपना with a healthy balance, but मुझे पता है कि all of this is going to fade away यार. Eventually what will last will be your talent. And you know this वो phases होते हैं ना, तो ऐसा हुआ था. This was almost 2-3 years back when I was speaking to somebody from Netflix, and they were saying कि we are casting for, it was such a big show. Yeah. And they said we are looking at a 17-18-year-old girl, and these are the options. And I didn't see any single of them that were actors. I said, who are these girls? I've never seen them. They said, no, she's got 8 million following, she's got 7, she's got this. I said, what about the talent? She's like, no, boss, you've got to move with the times. And this is what the time calls for right now. And ये बनी बनाई ऑडियंस है. Yeah. तो मैंने कहा तो बनी बनाई ऑडियंस तो टीवी एक्टर्स के पास भी है. Correct. तो उनको क्यों नहीं कास्ट करते हो? Correct. So नहीं यार वो टीवी है. I said, but give me a logical explanation as to why do you diss out TV talent? And there's no reason. But even in TV, don't you think so? और ये मैंने हमेशा कहा है, with due respect to all the big stars of television, like let's say दिव्यांका, who's like probably one of the biggest stars, कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप दिव्यांका को लोगे तो टीआरपी जितनी ये मोहब्बतें की आएगी उसकी दूसरे शो की भी उतनी आएगी. Absolutely. You know, there is no guarantee. Absolutely. It's the written content. It's how it's also sometimes, you know, the content could be fantastically written, but it doesn't connect. Correct. Or the time slot is wrong, or the there's so many factors here. If there was a formula, then why would Karan Johar not get it right every time? Yeah. They've got the best talent. Not They've getting the it most right a lot of times these days. I mean, everyone. Yeah, everyone for that matter. I just mentioned one, but it's a very challenging time for all the filmmakers right now. But as an actor, to stay put, to have that conviction कि अपना टाइम आएगा, तो वो बहुत मुश्किल होता है, you know, for a lot of people. Some crumble. कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ और करने लग जाते हैं. What gives you the strength कि नहीं, मतलब ठीक है, मेरा भी टाइम आएगा? Because obviously money is different, you know. Anybody can make money on television by doing the right kind of project, but that acting वाला recognition और किसी को नहीं मिलता है. I don't know, I can't explain this, but I think I just have immense amount of self-belief. My faith is too strong, I think. And where does it come from? It like doesn't for dwindle. people जो नए आ रहे हैं, कहाँ से लाएं वो faith? I think it is कहाँ से लाएं, अपने ऊपर काम कीजिए. अगर आप जितना काम करेंगे अपने ऊपर, if you're putting in the hours every single day towards something, sooner or later it will materialize. It is just about time. Yeah. Okay. It is just perseverance, like they all say, you know. But you've got to believe in it. कि हम बोल तो देते हैं वो कि I like to persevere and I am working hard, but quotes तो हम कर देते हैं, लेकिन आप कितना करते हो, कितना शिद्दत से उसको फॉलो करते हो, तो वो आई थिंक अगर करोगे तो फिर आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, जैसे मुझे आया है. एक और चीज़ मैंने एक बार सुनी थी, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि मतलब मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग करने के लिए लोहा उठाना पड़ेगा, और ये मैं बहुत कैजुअली बोलता रहता था, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु हैज़ अ ग्रेट बॉडी,
But when I literally saw people like Tiger Shroff and all working out day in, day night, I think it's like a sadhana. आप बहुत मुश्किल काम है, बड़ा आसानी से लोग इंस्टा पे लिख देते क्या लिया भाई, टोचन, स्टेरॉइड, बट अगर वो भी लेकर आपको रोज वो करना ऑनेस्टली नहीं होता है. How do you get that every day उठ के जाना, every day वो करना, without knowing that this will result into a great role? Because I'm not doing it for the role. You're doing it for yourself. I'm doing it for myself, and I've not done it now. I've been doing it from when I have a recollection from my childhood. I started exercising when I was 17, and before that I was an athlete in school. I did long jumps, relay races, high jumps, and everything to do with athletics I was a part of. अच्छा, तो sports वाले Sports पे was always a part of an inherent part of my lifestyle. But you always wanted to be an actor? I always wanted to be, but I didn't have the courage to tell this to my father. तो कैसे बोला? तो मैंने बोला नहीं, वो मैं फिर he sent me to study in the UK, और मैं वहाँ से पढ़ाई करके जॉब करके I came to Bombay at the age of 30. तब तक मैं well settled था. Oh. Yeah. So I was working as a business analyst in the UK. I came back and then I told my dad, I said, look, I've got everything. I've secured myself. I've got certain amount of savings also. Would you now have a problem if I pursue acting? I just want to go and try. And try. And if things don't fall, I will come back. And I think वो क्या होता है ना कि once you become a man, yeah, there's certain amount of conviction in the words that come out of your mouth. हाँ, तो फिर वो he saw something in my eyes and he said, okay. So that was, and trust me, if he had said no, I wouldn't have come. पर तुमको लगता है वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ की इज्जत तभी होती है जब बेटा कमाने लग जाता है. Is it true? To a large degree, है ना? yes. Because I think we start respecting people more when they're earning or like अब आपके ऊपर dependent नहीं रहे. Absolutely. वो तो I mean जब मैं वहाँ पे था तो मैं जॉब्स कर रहा था तो वो तो उनको फीलिंग पहले आ चुकी थी. So and he was quite a few years into this feeling when I told him कि मैं अब ये करना चाह रहा हूँ, I want to take a break, and he was okay with it. Television obviously has given you a lot of things and primarily television से ही आपने अपनी शुरुआत की. What is that one thing that you're extremely thankful to TV for, and what is that one thing that you think this needs to change or this needs to be worked on? I'd like to start with gratitude. Yes. Because obviously my identities is I learned everything. Like I said कि मैं जब आया था यहाँ पे and I didn't know anything. I only came to aspire to be an actor. I wasn't an actor before I started working in television, before I got that training. Okay, so when I started, I remember the first day I was shaking. My legs, because I started playing a character artist. It was a cameo that I was cast for. तो मैं फर्स्ट डे पहुंचा हूँ और मुझे काफ़ी घंटे जैसे होता है टीवी में कि आपका कॉल टाइम जो है वो बिगिनिंग ऑफ योर शिफ्ट आपका वो दे दिया जाता है और मेरा शॉट लगा रात को ऑन द 13th hour. Okay, so 12 hours and I've been bugging my lines in desperation to this is my first shot and I want to get this right. I don't want to do retakes. और वो फिर क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा सोच के I want to give my best, I want to give, तो वो आप ना वो कर ले, mess it up, एंग्जाइटी हो जाती है. तो वो एंग्शियस था मैं. I was on my mark, 13th hour, without sleep, not with proper food, and the director was second unit director, very impatient, especially when it came to character artists. So he was losing his cool, and he said कि यार अरे चलो इसको लेके आओ यार, वो इंस्पेक्टर को लेके आओ. तो मैं आ गया अपना यूनिफॉर्म और टोपी वोपी लगा के और खड़ा हूँ वहाँ पे. एंड ही सेड के चलो एक्शन. एंड द सीन वाज सपोज्ड टू स्टार्ट विद मी एंड आई वेंट ब्लैंक. सो ही सेड अरे कट यार, अरे इसको लाइन कराओ यार, अरे तुमको लाइन नहीं आती है, तुम क्या कर रहे थे. एंड ही मेड इट इवन वर्स बिकॉज ही that's I mean I have a very solid memory of that day and I said oh my god this is dreadful. I can imagine. He says कि तुम 13 घंटे से क्या कर रहे थे यार, तुम्हारा कॉल टाइम कितने बजे का था. And he was saying it on mic. So I started trembling.
I said, sir, and see, I am a guy, you've got to understand, this is not a 18-year-old, 17-year-old, 20-year-old who he's talking to, who's just trying to become an actor. Now, in my head, I had a battle, you know, there was a continuous battle because I was earning very well, leading a very nice lifestyle in the UK. I was driving a BMW for that sake, okay, in the UK. So leaving all of that behind, I'm just giving you a perspective. No, I'm getting you know, it's not like to flaunt or anything. But leaving that aside, now here to pursue my dream. So for me to take all of that was like, oh my God, matlab I got shattered inside. Yeah. Ke, who is he talking to? Does he even know who I am? तो मुझे तो ऐसा मेरा मन किया कि मैं उसको दे दूं उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम आई सेड नो, आई हैव गॉट टू बी पेशेंट एंड आई हैव गॉट टू लर्न. ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ. तो फिर धीरे 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 करके सीखा. तो बट वो एंग्शियसनेस ख़त्म नहीं होती थी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर गुड 6 months और सो, मतलब वो सीन आने से पहले I'd be very excited in the morning when कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, शूट पे जा रहा हूँ. बट जैसे ही सीन की बारी आती थी इन द ग्रीन रूम, चेंजिंग रूम में मैं जब बैठा होता था, तो जब वो बुलाने आ रहे होते थे तो दुख 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 कि भाई लगने वाली है अब. और क्या होता था, जब मैं वापस आया था ना, तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में सोचता था और हिंदी में लाइंस होती थी. that happens, yeah. तो वो बड़ी दिक्कत होती थी. तो मैं पहले जब लाइन देखता था, हिंदी की लाइंस, पहले मैं उसको ट्रांसलेट करता था दिमाग में कि ये इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, और फिर मैं इसको वापस हिंदी में याद करूँगा. तो वो सब से आपा. तो एनीवे, वाज डिफिकल्ट, बट हैविंग सेड दैट, आई एम ग्लैड दैट आई वेंट थ्रू दैट चैलेंजिंग फेज, बिकॉज उससे जो निखरा हूँ, जो चीज़ें सीखी हैं. नाउ आई मीन आवर ट्रेनिंग, टीवी एक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है यार, हम लोग अफलातून बन चुके होते बाय द एंड ऑफ इट ऑल. मतलब आप दो साल शो कर लो कोई भी टीवी का, है ना. उसके बाद तो ये होता है कि अब नाउ इट्स वेरी स्टूपिड फॉर पीपल टू से कि टीवी एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती, ओवर एक्टिंग करते हैं. अरे बॉस, टेस्ट अस. You give us a good director. No, we are tested every day on the sets. Yeah, no. If they think that we can't perform on the 70 and we can't do subtle acting, please. I agree. Keep that BS to yourself. Honestly, Yeah. all you need is a good director. All you need is a couple of workshops where you sit down with the director or by yourself and work on the detailing of the character. You'll understand everything. It's not rocket science. No, it's like, you know, आप गली क्रिकेट में भी एक बहुत बढ़िया प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि वो गली क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है. Correct. Similarly, जब हम लोग खेलते हैं, it's not a level field. Yeah. You know, when a Ranbir Kapoor is shooting for a scene, he can get into the character, go inside the zone, Yeah. and shoot a scene for over 5-6 days. Yeah. We shoot like 7-8 scenes a day. Yeah. So Yeah. I've always said that television actors actually, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, but actually are superior in terms of Their craft. Yeah. Yeah. क्योंकि we're churning out like an industry every day. Yeah. Okay, so what needs to change? The TRP system. जिसकी वजह से सारे decision लिए जाते हैं. That's a bummer because unless we start making finite shows where we know the start till the end, we will just be in that rut of creating content as per the tracks required by the audience, you know, कि हाँ अभी शादी का डाल दिया ज़बरदस्ती का, 3 दिन चले जा रहा है TRP, फिर मार दिया, फिर reincarnation हो गया. Anyway, चलो वो that's very stereotypical of me to say कि हाँ वो वैसा है TV. There are obviously nicer shows also, but I think the content needs to be a little more evolved as to how things used to be in the 80s and the early Correct. 90s. We used to learn so much from TV. Yeah? Correct. And we used to look forward to, I mean, TV should be like, वागले की दुनिया. हाँ मतलब क्या है कि it should be a true representation of the society and not something that a tier 2 and a tier 3 city can only relate to. Correct. Do a blend, na? Do Yeah. a mix. Yeah. I'm not saying completely eradicate tier 2, tier 3, don't, you know, वो है, वो you can still, but उनके लिए भी कुछ एस्पिरेशनल होना चाहिए, ना कि उनके घर की कहानी होनी नहीं, पर चाहिए. विवेक बात बताओ, टियर 1, टियर 2, टियर 3 कुछ भी बोलो तुम, कौन अपने घर में जैकेट पहन के ब्रेकफास्ट करता है? या कौन सी लड़की सुबह उठ के eyeshadow makeup. लगा के सोते जाती हाँ, है? सुबह उठ के So makeup, those- lipstick मतलब होती वो तो मुझे कभी समझ ही नहीं आ रही नो. जब हम टेलीविजन के जो ब्रेकफास्ट सेट्स होते हैं मुझे बहुत फनी लगते हैं. 4 एप्पल कटे हुए होंगे, एक ऑरेंज जूस रखा होगा, ब्लैक कॉफी रखी होगी, लाइक आप एसिडिक कर दो बॉडी को भाई, सब कुछ डाल दो. इट्स वेरी how I really crave to, and you know, although I have drifted a little from TV past few years and I want to do films,
But I would very happily go back to a television show if ever you come and tell me as a producer that I'm looking to shoot this in a real location, not in a set, for You'll have to example. wait for me to turn a producer. Do it. Let me just make enough money. You are already a producer. Might as well make a TV show and cast me in it. No, honestly, that's one of my dreams going behind this thing is that क्योंकि हम सब ने ना television से शुरुआत की है. No matter what people say, this is something that gave us that chance of acting because for Yeah. people like us जो small town से ही हैं, we are not Yeah. like from big cities. I'm very grateful that TV gave us that chance, but जब हमें सुनना पड़ता है कि oh you're a TV actor, it does. I'm like sorry यार ये मत बोलो. We do not crack under pressure. Yeah, we Just don't. FYI. ट्रस्ट मी जिन गाली गलौज के माहौल में हम काम कर सकते हैं आई डोंट थिंक सो रणबीर कपूर कैन. अच्छा टीवी तो तुम कर लोगे पर अगेन आई कम बैक टू द कि आज हमें पहली बार पता चला है कि आपके अंदर एक एग्रेसिव जाट भी रहता है जो बिग बॉस में बाहर आता है. बिग बॉस क्यों नहीं करोगे? ये मेरा सवाल स्टैंडर्ड होता है बिकॉज ऑब्वियसली अभी सीजन भी चल रहा है तो ट्रेंड करेगा ना इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा. नहीं मैं बिग बॉस करूंगा यार अगर मेरे अभी क्या है कि मुझे ना देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेशंस. देयर आर लाइक राइट नाउ आई एम को राइटिंग समथिंग. यू आर को राइटिंग. या वाओ. या सो वो ऐसा होता है कि बिग बॉस जब भी कास्टिंग हो रही होती है ना उस टाइम पे माई मेंटल स्पेस इज समवेयर एल्स. सो राइट नाउ अगेन आई एम इन दैट स्पेस वेयर आई वांट टू डू समथिंग एल्स. तो वो ओके आई एम नॉट एंड आई से दिस वेरी ओपनली आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर. अच्छा. I am being very honest. Divyanka would tell me sometimes कि ये कर लेना और सुनो जाते जाते ये भी कर लेना. Sorry, I can only focus on one thing at a time. तो मेरी ये weakness बोल लो या जो भी कह लो. या तो आलू मंगवा लो या प्याज मंगवा लो दोनों नहीं ला सकते. नहीं उतना बुरा नहीं है. आलू प्याज में दोनों साथ में लेके आ सकता हूँ. But you know like leaving this behind and when I start something I want to finish it and then move on to something else. तो ये हो गया and then if the timing is right sometime I'm sure sometime in the future, I never say never, I will do Big Boss. But when the time is right, when I am not occupied mentally doing something else, तो तब देखेंगे. चलो खत्म करने से पहले एक बात बताओ जो जिस पे टिके रहोगे. ठीक है अनसेंसर्ड है तो अनसेंसर्ड ही जवाब देना पड़ेगा कि एक चीज तो चलो बिग बॉस तो करूँगा एक चीज तो नहीं करूंगा नो मैटर व्हाट विच इज दैट वन थिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. है ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं करूंगा. हाँ ओनली फैंस अकाउंट. What do you mean sorry? You don't know OnlyFans? नहीं. Vivek, I'm telling you, Vivek is like my dad. He बहुत बेचारा मासूम. I can't tell you on camera what is OnlyFans. I will tell you off camera what is OnlyFans. क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो why corrupt? क्यों ही बेचारे को बताया जाए? ऐसा क्या है? But यार बता दो इसमें क्या है? But your show is called Uncensored. Yeah, actually मैं क्यों? So OnlyFans is basically where adult performers, for the lack of better word, display their talents. And that's why they get paid and there are people who are earning like millions of dollars by just displaying their talents. Okay, fantastic. So that is OnlyFans. So then what's your question? Will you do OnlyFans? Like I said, never say never. I'm open to everything. Yeah, promo मिल गया मेरे को. Yeah, you ये never मेरा know. promo है. You never know what gets into me one fine day and I'll say that's it. This is my OnlyFans. जो तुम्हें आलू प्याज जो मंगाए जा रहे हैं ना उसके साथ इतने डंडे मिलेंगे ना घर पे जाने के बाद. But no, Vivek, I honestly had a very different image of you ना कि yeah, good boy, green flag सब अच्छा बोलते हैं. But I'm very glad to have this intellectual, mature, intelligent discussion because एक बात मैं honestly बोलना चाहूँगा टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों से आपके वैसे डिस्कशंस हो पाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर टॉकिंग अबाउट किसका कितना पर डे है कौन सा स्टेरॉइड लेना है और कौन सा शो कर रहा है व्हिच आर वेरी वेरी बोरिंग. सो थैंक यू. नहीं वो मुझे पता है वैसे अगर उसके ऊपर कभी डिस्कशन करना होगा तो हम कर सकते हैं. तो किसका कितना पर डे कौन सा प्रोटीन ले रहा है? You want me to tell you now? Yeah. Content. I'll tell you later on. Okay. No, we are not doing that content. But no, thank you so much. And I genuinely am very happy that there are people like you who you can sit down and just have a very nice intelligent chat. I'm sad that why didn't we become friends earlier? Like honestly मुझे जब संदीप से भी This never too late. हाँ अभी नहीं अब तो मतलब हो गया. I think मेरे podcast में हो गया मतलब you've given up on friendships? नहीं अब ऐसा हो गया कि मैं डिसाइड करके बताता हूँ आपको
मैं अब पूछता नहीं, देखो तुम मेरे दोस्त हो। अब ऐसा होता है मेरे साथ। So but no, thank you so much. I am been a really pleasure, really yeah. glad, and honestly I'm glad also because see, I think Divyanka is from the same city and we were in India's Best together. So there's this, you know, same city, not same city, Indore, Bhopal, but we contested from the same place. Yeah. एक अपना territory वाला होता है कि ये There's a हमारे very strong territorial bond here. in MP बहुत होता है. Everywhere actually, हरियाणा से भी, MP से भी. Yeah. So I would just like to say Divyanka approved. हाँ? दिव्यांका what? Divyanka approved. वो समझ जाए. Good अच्छा. choice is what I would say. तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ यार. It took you bloody 9 years to say that. देखो सिर्फ जाति थोड़ी ना ऑनेस्ट होते हैं, हम भी तो हैं, हमें भी टाइम लगता है, ऐसे ही क्यों बोल दे? Fair enough. ठीक है. नहीं, now I know. Yeah. Now I know. Yeah. That you mean it from your heart. Yes, that's true. हाँ. Because अभी तक तो हाई हेलो होती थी, but no, after sitting down, thank you so much It's for been a coming to pleasure, यार. Uncensored with Shadul. आपने अपनी कॉफी वेस्ट कर दिया यार, पी ही नहीं. नहीं, मैं पी रहा हूँ. Should we get you a refill? No. Absolutely fine.